Let's get you started on this edition with breaking news coming in from Ranchi in Jharkhand, where violent protests took place on Friday after the Friday prayers, where multiple policemen were injured. And Times Now has spoken to one such policeman who suffered a bullet injury on his leg. Listen in to him narrating what exactly transpired, how many people had actually gathered there, and the kind of weapons that they were carrying and that they used against the policemen. पहले रवाई की अगर बात फायरिंग किया इकट्ठा सब किया हम गोली लगा हम भागे अपना हॉस्पिटल आ गए। तकरीबन कितने लोग थे जो 10,000 लोग थे। 10,000 लोग आप बोल रहे हैं कि इकट्ठे हुए थे तो रोड पे ही भीड़ था पूरा। और सभी लोगों ने एक साथ आकर जो आप पुलिस के जवान थे जितने भी वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे उन पर पत्थरबाजी क्योंकि कई मंदिर दुकानें और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। रोड़ा पूरा बिक रहा था, मंदिर पर रोड़ा बिक रहा था, तोड़ पार कर रहा था। हमने शांत कर रहे थे कि शांत हो जाए, इसी तरह से किए कि नहीं माना रोडबाजी उन्हें से फिर फायरिंग होने लगा। तब फायरिंग तो हमने फिर फायर किए, बाद में फायर किए, और बाद फिर हमको लगा गोली लगा, फिर हम चल आए पर हॉस्पिटल चल आए। भीड़ में थोड़ा पता लगा रहा थोड़ा सबके नाम जान रहे थे कि उनको लगा कि चोट से करीब सब करीबन के लगा है। कोई महिया लगा, कोई देह में लगा, अभी उसको भी उनको भी देह में लगा है। पहले जुलूस किया, अथी नारा लगाया, और बाद धीरे धीरे अपना इकट्ठा किया होगा। बाद में भीड़ थोड़ा पता लग रहा था, पूरा भीड़ में था। जैसे फायरिंग किया तो हमने भी फायरिंग आसमानी फायरिंग की, आदेश मिला था। Aishwarya, my colleague, now joins us live from Ranchi there. Aishwarya, we've heard these testimonies that have come to the fore from the injured policemen, from the victims there. An entire police force of the state government came under attack by this rioting mob. But unfortunately, Soren government does not seem to be wanting to expedite action against the culprits, even though their own administration came under attack. And that is the reason perhaps till now it's been more than 2 days and no arrests have been made so far. When we asked about what is happening on the part of investigation, the police has said that they are collecting all the video evidences, collecting CCTV cameras and trying to identify those people who started the protest on June 10th. And there have been several people who have been called for interrogation, but they have been released. But as far as today is concerned, there has been no which have been made so far. In fact, on the day of protest, when the protest turned violent, it was the police officials who was under attack, and we have seen several CCTV footages and videos as well where police is trying to hide themselves because they were certainly outpowered in numbers. There were thousands of protesters which came from Ekra Masjid on one side and thrown and they pelted stones on the police officials, in which several police personnel got injured. And we spoke to one of the police constable, Akhilesh. He clearly stated that there were almost 10,000 people who came and they started pelting stones on them. There were weapons with them, and open firing was made by them, and therefore in retaliation, in action, they opened fire, and therefore the reason perhaps 14 to 15 police personnel got injured. Till now, the death toll has to 2, but the official figure says that 25 FIRs have been registered and more police deployment is there because the law and order situation is the police is trying to make law and order situation under control, right. But there is still a tense situation out here in Ranchi after the violence that broke out. Absolutely, and like you've been mentioning, it's been 48 hours and counting and no arrests have been made in this particular case, even though there are multiple testimonies and videos that are under the scanner of the police. There are multiple CCTV now which have been accessed by your channel here that show how a violent mob went on a rampage. The latest video that Times Now has access for you, you can see in that video a mob that is seen pelting stones at the Sankat Mochan temple in Ranchi. The glass windows of the temple were completely vandalized, they were broken. While the injured police rushed inside the temple amid the attack, they wanted to take cover as well. Now, as many as 25 FIRs been registered in this particular case. There is an SIT which is also investigating the matter. All of this video footage is there for the policemen to identify who the culprits are, but unfortunately no arrests have been made.
First, listen in to what the police have to say about what exactly transpired on Friday and what has happened in the name of investigation in the last 2 days. जिले में अभी 25 एफआईआर प्रतिबंधित हुए हैं। कुल मिला के 22 लोग जो है नामजद हैं और जो हैं सैकड़ों अज्ञात पे केस हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए ऑलरेडी एक एसआईटी फ्रेम किया गया है और वो एसआईटी के साथ हमारा एनालिसिस विंग है, हमारा टेक्निकल विंग है, जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज का हो, चाहे वो ड्रोन कैमरा का हो, हमारा कंट्रोल रूम कैमरा की स्थिति हो, मीडिया बंधुओं से जो कुछ आए हैं हमारे पास वो हैं रिकॉर्ड, कुछ साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए हैं, सीआईडी की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। As far as the situation is prevailing in Ranchi city, I am talking about, the situation is under control and very much relaxed. We have identified 38 pockets. We will not reveal those 38 pockets, but these 38 pockets are confining to 6 police stations, which I have already told you, like Lower Bazaar, Daily Market, Doranda, Hind Pidi, Chutia. These police stations where these pockets have been identified, and we are closely monitoring. Now, in Uttar Pradesh, there have been over 300 arrests that have been made in the last 2 days for those that could be held guilty for creating this mayhem. But look at Ranchi, no arrests absolutely so far. And when asked, the police said that the Ranchi riots cannot be compared to that of Uttar Pradesh and that due process will follow. हर जो इंसिडेंट है अपने आप में यूनिक इंसिडेंट होता है और यूनिक इंसिडेंट के का जो एक अपना सबका कोर्स ऑफ एक्शन होता है। हम यहाँ के जो इंसिडेंट की कंपेयर किसी और जगह से तब नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम यहाँ अपनी चीज़ों को देख ना लें, एविडेंस कलेक्ट नहीं कर लें। क्योंकि मैं जो बोलूँगा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया के रूप में बोलूँगा तो मैं वही बोलूँगा जो मेरे पास फैक्ट होंगे। मैंने फिर से कहा है, यदि किसी और जगह पे कार्य, यहाँ के अपने हालात थे, यहाँ पे डिफरेंट तरह की इशूज हुए थे, डिफरेंट तरह लॉन्डर हुए थे, यहाँ पे डिफरेंट तरह से इंजरी आए थे सारे ऑफिसर्स को। आपने देखा होगा यदि हम लोग इतने होते हैं तो डीसी ऑन द स्पॉट थे, डीआईजी ऑन द स्पॉट थे, एसएसपी, मैं खुद, हमारे सीटीएसपी, तमाम पदाधिकारी वहाँ स्पॉट पे थे। तो हमारे इंसिडेंट अलग थे और इंसिडेंट से, हमारे हालात अलग थे, हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं। बस इन्वेस्टिगेशन में जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगा, साक्ष्य आधारित होगा, वो निश्चित रूप से होगा। देखिए, इसमें जो घटना हुई थी 10 तारीख को, उसके बाद एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया है जिसका नेतृत्व सिटी एसपी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे भी ये इंसिडेंट हुआ है मेन रोड पे, वहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इनकी स्टेटमेंट पे प्राथमिकी दर्ज हुई है। उसके अलावा जो निजी व्यक्तियों की, यदि किसी की संपत्ति नष्ट हुई है, किसी को इंजरी हुई है, उसके आधार पर भी प्राथमिकियाँ हुई हैं और कुछ इसमें नामजद अभियुक्त भी हैं। और ये एसआईटी के द्वारा लगातार उस पूरे क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है। उनमें जो दोषी व्यक्ति होंगे उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी 8 प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। उसके अलावा जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उनको भी उन पर भी अनुसंधान चल रहा है।